Hello dear friends, welcome to your own channel Gramification. I hope you all are enjoying this chilled winter. In our previous classes, we were discussing about two important topics that were by default singular nouns and by default plural nouns. हम अपने पिछले वीडियोस में जो टॉपिक्स देखे थे दैट इज बाय डिफॉल्ट नाउन्स सिंगुलर होते हैं और बाय डिफॉल्ट कुछ प्लूरल नाउन्स होते हैं. इन टुडेज क्लास रिलेटेड टू इट वी विल गो फॉरवर्ड एंड वी विल सी दैट देयर आर फ्यू नाउन्स दैट लुक्स एज सिंगुलर बट यूज्ड एज प्लूरल एंड वाइस वर्सा. हम आज के वीडियोस में ऐसे कुछ नाउन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो दिखेंगे सिंगुलर बट उसकी यूज प्लूरल फॉर्म में, और ऐसे कुछ नाउन्स हैं जो दिखेंगे प्लूरल बट उसका यूज इन अ सिंगुलर फॉर्म हम यूज करते हैं. सो लेट अस कम टू द बोर्ड एंड स्टार्ट द टॉपिक. एज आई टोल्ड यू, नाउन्स लुक्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज. दिखते हैं प्लूरल बट यूज है सिंगुलर. The things are like news, innings, physics, etc. For example, news are circulated very fast nowadays. No doubt, news are more than one, but still we consider it as a singular. उसका जो use होता है वो हमेशा singular form में होगा. So news is, no doubt it is plural, but it will be considered as a singular one. The same, physics are a difficult subject. No doubt it seems plural, but उसके जो use होगा that will be singular one. Next, come to the next topic. Nouns that are singular in form but plural in use. दिखते हैं singular but उसके जो use होते हैं we use it as a plural form. These are like cavalry, poultry, cattle, etc. Let us see example. The cattle is grazing on the field. In this sentence, the cattle, it is singular, but we always consider, we don't know exactly that whether it is one or two or more than. So here it is considered by default as plural. So the cattle are grazing on the field. Like the same, our cavalry is, no, it will be are. Our cavalry are very strong one. So the Monday's topic as well as today's topic is very, very important. So please have a go through again, and if you are having any doubts on it, so you can comment on the comment section also. Thank you and have a very nice day.